Friends, my today's topic is effect of infection on physiology of the host. This topic I gave to my student Sandhya Sharma. She is prepared PPT on that. We can take first the introduction about that. Plant physiology is the science. First of all, we define as the topic indicate that effect of infection on the physiology of the host. So first, what is physiology? Plant physiology is the science which deals with the life processes of plants, or it deals with the function of cells, tissues, organs or the plant as a whole. क्या है प्लांट फिजियोलॉजी? जो कि डील करते हैं, इसके अंदर में स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, उनके फंक्शंस ऑफ सेल्स, उनके टिश्यूज़, उनके ऑर्गन्स और इट्स सेल्फ एज ए प्लांट होल. Plant disease is an outcome of interaction between host and pathogens. Interaction begins with physical contact and effect remain localized until host tissue have been penetrated. Means the infection is start when the pathogen they make their entry in the body of the host. Depending on pathogen and the plant organ and tissue, they infect and interfere with the different physiological functions of the plants. So this is in this slide we can define what is the introduction, what is plant physiology and what are the pathogens, how they can infect the and causes if they can causes an effect on them. The harmful effect of infection on physiology of the host are the main cause of symptoms, experience, damages and losses. Few harmful effects are the disintegration of the tissue, effect on growth due to hormonal imbalance, reduction in the photosynthesis and abnormal transpiration. तो जब होस्ट के अंदर पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, देयर आर सो मैनी इफ़ेक्ट्स. एक तो टिश्यू डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हो जाता है. पैथोजन इन्फेक्टिंग फ्लावर्स इंटरफियर विद द सीड प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. जो रूट पैथोजेंस होते हैं दे अफेक्ट ट्रांसलोकेशन, रिजल्ट इन इट्स विल्टिंग एंड डेथ ऑफ द प्लांट. इन एडिशन टू दैट, सो इस तरह से आपने देखा कि एक तो रूट पैथोजेंस हो गए. अब फोलियर पैथोजेंस इन्फेक्ट द पार्ट ऑफ द लीव्स, स्टेम, पेटियोल एंड अदर एरियल पार्ट्स. दे डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल फॉर्मेशन लीडिंग टू रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, इफेक्ट ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द प्लांट्स. जितने एरियल पार्ट्स होते हैं, दे मे बी द लीव्स और मे बी द स्टेम्स, पेटियोल्स, ऑल द एरियल पार्ट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, दे गेट्स इन्फेक्टेड. क्लोरोफिल कंटेंट जो होते हैं दे कैन बी रिड्यूस्ड. जो क्लोरोफिल कंटेंट्स होते हैं तो ये कम हो जाते हैं, इनका फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है, जो प्रकाश संश्लेषण है, ये भी कम हो जाती है. इसके अलावा दे ऑल्सो इफेक्ट ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द प्लांट. इन एडिशन टू दैट दे ऑल्सो कॉजेज सम चेंजेस इन द सेल बायोलॉजी ऑल्सो, लाइक दैट ऑफ स्ट्रिकिंग इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस एट site of penetration, granulation of cytoplasm particles, cell contents become yellow and finally dark brown leading to the death of the cells. Here we can saw in this slide the diagram showing the effect of pathogen on plant physiological functions. So mainly in plant there are so many important physiological functions like that of their photosynthesis, respiration, translocation of water and nutrients, transpirations, permeability of the cell membranes and transcription and translation. So ये इस तरीके से आप ये देख रहे हैं जितने एरियल पार्ट्स हैं, रूट्स हो गया, ये दे ऑल गेट्स इन्फेक्टेड बाय दिस और इनकी फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है. फर्स्ट that is the photosynthesis. Everybody knows what is the photosynthesis. Photosynthesis is a process in which the green plant and green part of the plant, they are able to synthesize its own food with the help of CO2 or H2O.
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस के अंदर, या दे कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और O2 रिलीज होती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द ग्रीन प्लांट। It transforms light energy into chemical energy which is utilized in all cell activities. जो लाइट एनर्जी, जो सोलर लाइट होती है, उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और जो उससे जो एनर्जी मिलती है उससे वो प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती हैं। एनी इंटरफेरेंस ऑफ पैथोजन with photosynthesis result in plant disease conditions. Once the pathogen is established in the host colony, it redirect the host nutrients for their own use. This condition is known as metabolic sink. ये डायग्राम से शो किया गया है कि ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये सनलाइट इन पर पड़ती है और ये वाटर, और ये आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्लोरोफिल इसमें ये मौजूदी है और ये भोजन यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं और ये ऑक्सीजन एक साइड में ये निकलती है। इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस in leaf spots, blight and other disease in which there is destruction of leaf tissue. Example in cereal rust and fungal leaf spots, bacterial leaf spots, viral mosaic, yellowing and stunning disease, or in defoliations, photosynthesis is reduced. So these are the effect on the photosynthesis. In addition to that, the chlorosis, necrosis and reduced growth and yield, reduced amount of photosynthetic surface, chlorophyll degenerations, produce toxins that inhibit enzymes like that of tentoxins or taptoxins. Vascular pathogens reduce the chlorophyll and photosynthesis rate. Stomata remain partially closed. तो ये सब इस स्लाइड के अंदर आपने ये देखा, ये चीज़ें इफेक्टिव होती हैं फोटोसिंथेसिस। ये स्लाइड्स showing the different diseases like that of the leaf spot of barley, leaf spot of eggplant, weak leaf rust, mosaic, yellowing and stunning of rice, leaf spot, etc. जो different pathogens हैं उनके द्वारा ये infections हुए हैं। Second main जो major physiological activity है, that is the respiration, is the process by which the cell, through enzymatic oxidation of organic materials, produce energy for various activities and carbon scaltions. In plants, the process of respiration takes place in two major steps. It is to be completed in two major steps. One is glycolysis, second is the terminal phase. जो ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक एसिड। दो तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे दिखाया गया है और ये रिएक्शन इसमें नीचे ये बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए का भी यूज़ होता है। रेस्पिरेशन इन डिजीज़ प्लांट, जो डिजीज़ प्लांट्स होते हैं इसमें रेस्पिरेशन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कि इन्फेक्टेड प्लांट शोज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड स्लाइट राइज इन टेम्परेचर। अफेक्टेड टिश्यूज यूज अप देयर रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स faster than the healthy tissues. Increase in respiration starts soon after introduction and rises to the maximum rate coincident with the sporulation of a fungal pathogen and then decline to normal or subnormal level. In resistant plants, the rate of increase in respiration is very rapid but declines soon, while in susceptible plants respiration rises slowly but lasts for longer time. Increase in plant metabolism and protoplasmic streaming. Increased respiration has been noticed in cereals rust, powdery mildews, blast of rice, late blight of potato and many other diseases. So these are the in disease plants the respiration affected by the pathogens. In addition to that, some other like that of levels of many enzymes associated with respiratory process is increased in the disease plant. Accumulation and oxidation of phenols also
increase with increase in respiratory rates. Disease plants carry out more fermentation than the healthy plants. So there are the two major physiological aspects which are affected by this. Here you can show here, ये स्लाइड्स के अंदर दिखा रहे हैं ब्लास्ट ऑफ राइस है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पाउडरी मिल्ड्यू एट्सेट्रा. नाउ इफेक्ट ऑफ अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. एक मेजर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, दैट इज द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस इज टू बी टेक्स प्लेस बाय द जाइलम एंड फ्लोएम. वी कैन सो हियर इन दिस डायग्राम के जो ट्रांसलोकेशन होता है दैट इज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम रूट्स. रूट्स जो होती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं और ये थ्रू जाइलम सेल्स जो हैं ये ऊपर लीफ तक, स्टेम और लीफ तक ये पहुंचता है. सो हियर वी कैन सो इन दिस स्लाइड दैट xylem, water and minerals absorbed by the roots, translocated through the stem xylem vessels to vascular bundles of petioles and leaf veins, then enter into the leaf cells. Most of the water evaporates and diffuses into the atmosphere through the stomata, result in water tension in the xylem, pulls the water column upward and stimulates additional uptakes. Pathogen interfere with normal translocation process में कैसे करते हैं? Flow of nutrients are or water blocked, disease in affected cell tissues, inability to carry out functions, shortage of their products, disease in entire plants. In addition to that, pathogen impaired translocation of water and inorganic nutrients, root damage होता है तो उससे damping of fungi and root rot fungi, that is the bacteria, nematodes and some viruses. Mechanism of damages: cause direct injury into the roots, inhibit root their production after permeability of root cells. Xylem gets destroyed, xylem gets clogged. ये आप ये देख रहे हैं, इसमें ये एग्जांपल दे दी कि किस तरीके से ये जाइलम डेस्ट्रॉय होते हैं. तो रोट और कैंकर पैथोजेंस के द्वारा होते हैं और ये जाइलम जो ब्लॉक होते हैं, ग्रोथ ऑफ वैस्कुलस विद पैथोजेंस, ये वाले पैथोजेंस हैं. दीज आर द सम स्लाइड्स: ब्लाइट ऑफ पीपर, wilt of tomato, seedling damping of pythium, wilt of tomato etc. by Fusium species. ये आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा. Crown gall of apple, root gall by different species. In addition to that, the phloem is also an important part play in. That is, the carbohydrate produced in leaf cells move through plasmodesmata into adjoining phloem elements, move down phloem sieve tubes, move into non-photosynthetic cells or into storage organs, and nutrients are removed from circulation. How can pathogen impair translocation in the phloem? जैसे कि xylem में था, pathogen attacks and destroy phloem elements, interfering with downward translocation and nutrients. Starch accumulation in the leaves is a result of degeneration of the phloem infected plants. तो इससे लीफ कर्लिंग हो जाती है. Obligate fungal parasites, that is the rust and mildews, जहाँ पे रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है. वायरसेस दैट कॉज लीफ कर्लिंग लाइक दैट ऑफ टोमेटो लीफ कर्ल वायरस एंड सम येलो डिजीज कॉज डेथ ऑफ द फ्लोएम. सम वायरसेस इनहिबिट एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्मॉलर ट्रांसलोकेटेबल मॉलिक्यूल्स. नाउ द another important phenomena, that is the transpiration. Transpiration, everybody knows, evaporation of water vapors, evaporation of water. It is a process of water movement through the plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers. This affect pathogens. The pathogens are also effect on the transpiration, like that of disintegration of cuticle, increased transpiration, dysfunctioning in permeability of leaf cells, powdery mildew epidermal cell invaded by the fungus, and rust in blight. They also affect transpiration. These are the some effect of transpiration which causing, like that of wheat leaf rust,
powdery mildews, scab of apple, etc. Effect of pathogen on cell permeability of plants. Cell membrane. Double layer of lipid molecules, protein molecules embedded. Parts usually allow entry of substance the cell needs, inhibit passage out of the cell. Cell wall keeps large molecules away from membrane. Small water soluble molecules such as iron, sugars, and amino acids flow through or are pumped through membrane channels. That are the proteins. The diagram is cool. You just see here. Effect on cell membrane. Disruption of the cell membrane alters permeability, uncontrollable loss of useful substances and entry of harmful substances. Membrane permeability is often the first detectable response of cell to infection. Additional, that is the leakage of electrolytes. Unknown if membrane leakage is primary or secondary effect. If direct attack, pathogens probably use one of the following strategies: stimulate membrane bound enzymes that pump H plus and K, H plus ion in and K out, interfere with maintenance and repair of membrane's fluid film, degradable the lipid or protein components of the membrane. So these are the some other few examples. Transcription and translocation. Transcription, copying, coding on DNA on to messenger RNA. And translation, use of messenger RNA as a template to produce proteins. Disturbances of any of the process may affect expression of genes and causes drastic unfavorable changes in the structure and function of the affected cells. यानी कि इसके इन्फेक्शन से जो है सेल्स का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है. इसमें दिखाया डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. Effect of transcription. Some pathogen change composition, structure or function of chromatin associated with the cell DNA. Viruses uses host cell nucleotides and machinery to make its own RNA. Sometimes increase in activity of enzymes that break down RNA. Pathogen may be forcing plant to produce new kinds of enzymes not produced in healthy plants. Higher level of RNA in infected plants, especially resistant ones, and probably due to increased synthesis of substance involving defined defense mechanism. Now, effect of translation, higher energy needs, increased activity in enzymes associated with respiration, increased production of phenols or oxidation of phenolic compounds, use in defense reactions. Resistant plants have increased protein synthesis in first few minutes of infection. Level remain high up to 2 to 20 hours after inoculation. Conclusion. Finally, we can say that human and animals survive depend on plant growth. Agriculture, the world's biggest business, is based on ability of plant to grow and convert simple raw material to complex substance in order to suit human needs. The biochemical pathway in a plant are very highly integrated and interdependent and may disruption represent a loss of control by the host. Pathogen affect plants by inducing changes in the physiology functions. This leads to the reduction in quality and quantity of the products. So it is directly or indirectly affect out crop economy. That's all about. I think this is very clear to all of you, and all of you can see on my YouTube channel. Available.